Today's our topic is Dalton's law of partial pressure. John Dalton studied the mixture of gases and he introduced a law of partial pressures. सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लॉ किस तरह डिफाइन किया गया है. This law is stated as the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of their individual partial pressures. According to this law, if we have, for example, three gases and P1, P2 and P3 are their individual pressures, जिसको हम यहाँ नाम दे रहे हैं partial pressures का. According to Dalton's law of partial pressure, their total pressure will be equal to the sum of partial pressures, that is P1 plus P2 plus P3. पहले तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि what is mean by partial pressure. Partial pressure of any gas in a mixture of gases is the pressure that it would exert on the wall of the container if it will be present all alone in that same volume under the same temperature. यानी partial pressure किसी भी गैस का अपना प्रेशर है, इंडिविजुअल प्रेशर जो वो गैस एक्सर्ट करेगी. If it is present all alone, और अगर उसे मिक्स कर दिया जाए और गैसेस के साथ, but the condition is that these gases are non-reacting at STP, वो आपस में रिएक्ट ना करें, तो इस गैस का जो प्रेशर है it is called its partial pressure. इसको हम इस तरह समझते हैं by taking three gases. For example, I will be taking hydrogen, methane and oxygen gas. ये सिर्फ supposed values हम ले लेंगे. That partial pressure of hydrogen is 400 torr, partial pressure of methane, let's suppose 500 torr, and partial pressure of oxygen is 100 torr. अब इन तीन गैसेस को हमने अलग अलग कंटेनर में लिया है और the volume is same, that is 10 decimeter cube, and temperature is also kept constant for these three gases. ये थ्री वैल्यूज जो आपको नजर आ रही है ये इन तीन गैसेस की सपोज इंडिविजुअल प्रेशर है जिनको हमने नाम दिया है देयर पार्शियल प्रेशर्स. अब अगर इन तीनों गैसेस को हम एक फोर्थ कंटेनर में ट्रांसफर करें हैविंग द सेम वॉल्यूम, ये गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, मींस दे आर नॉन रिएक्टिंग एट STP, that is standard temperature and pressure. अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं by taking their sum, which means that PT means the total pressure according to the Dalton's law of partial pressure will be equal to the sum of partial pressures of hydrogen, partial pressure of methane and partial pressure of oxygen. Putting their values, जो हमने supposed values ली है, हाइड्रोजन के लिए 400 torr, मीथेन के लिए 500 torr and oxygen के लिए 100 torr, we get a sum of 1000 torr. These three are non-reacting gases and are behaving independently under the normal conditions. Actually, the gas molecules are moving rapidly, and they are colliding with the walls of the container, and each gas exerts a pressure independent of the pressure of other gases.